Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, we have completed the explanation of the first lesson, that is Al Quranul Kareem, the Holy Quran, in 6 sessions. And the seventh one was Al Khulasa, the summary of the lesson Al Quranul Kareem. Now we are entering into the eighth session, session 8, and that is the exercises of the lesson Al Quranul Kareem. You can see on the screen session 8 from the beginning. Bismillahirrahmanirrahim. Al Wahdatullah Unit 1, Ad-Darsullah Lesson 1, Al Quranul Kareem, the Holy Quran, session 8, At Tamareen, exercises. Tamreen, exercise, plural of Tamreen, At Tamareen, exercises. First, meanings of the words, Ma'ani al Mufrada. So, some words are given in the textbook. So, I noted here on the screen. You can see first word arsala, meaning ba'atha in Arabic, in English sent, S-E-N-T. But every verb represents a particular pronoun in Arabic. Means every verb will have a particular pronoun hidden in it, understood in it. It is called as Lamir Mustatir, hidden pronoun. So every verb will have a pronoun. So here arsala, ba'atha, same meaning. The understood pronoun, the hidden pronoun is in Arabic huwa. Huwa means he or it. And here I wrote here only he, because the pronoun here goes to Allah subhanahu wa ta'ala. And arsalallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent an nabiyina wal mursalin. And anbiya, prophets and messengers. So arsala और बाता मीन्स सेंट, ही सेंट, इन उर्दू भेजा, उसने भेजा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजा पैगंबरों को, इस तरह है. तो अरसला मीन्स भेजा, बाता भेजा, सेंट. सो वो प्रोनाउन बताने के लिए मैं ही ब्रैकेट में लिखा, मैं हुआ, ही, वो उर्दू में. अरसला इसी से है रसूल, भेजे गए, खासियत रसूल पैगंबर. बाथा भी हम बोलते मबूस हुए, पैगंबर मबूस हुआ. तो मबूस होना, भेजा जाना, दोनों वर्ड कुरान शरीफ में इस्तेमाल. बोथ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन द होली कुरान. सो अरसला, बाथा, and you may be given like these words to give the meaning. So better you learn all these words with this meaning. They will give you Arabic words. You will have to write translation in English. Not need to write Arabic words also. Arabic, this second translation, not needed. You can, if you learn, it is better, but you will have to write the correct meaning in English. So arsala, bheja, ba'atha, bheja, he sent. Now second word, akmaltu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. In the Holy Quran, Quranic verse in Surah Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum, I have completed my, Al-yawma, I have completed, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, I have completed a religion for you today. Wa atmamtu alaykum ni'amati, and I have completed my blessings upon you. It was that we have studied these words in our explanation of the Holy Quran. In our sessions, we have studied already. Both the words are used in that one ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan. So akmaltu,
अतमम तो सेम मीनिंग, आई हैव कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड और आई हैव कंप्लीटेड, मैं मुकम्मल किया, मैं तमाम किया, पूरा किया उर्दू में। उसके बाद अत-तज़कीर, अन-नसीहा, नसीहत, एडवाइस, या और एक वर्ड में रिमाइंडर, रिमाइंडर, नसीहत, एडवाइस कहते हैं। अत-तज़कीर, अन-नसीहा, एडवाइस। तो अत-तज़कीर, you will be given अत-तज़कीर, you have to write advice, नसीहत। नेक्स्ट वर्ड यजरऊ, यजरऊ हिम्मत करना, युहाविलु अमरम बिजसारा, उसका अरबिक में ही ट्रांसलेशन दिए। द फर्स्ट वर्ड यजरऊ ये है किताब में दिए सो, और ये भी अरबिक में दिए है किताब में, इसलिए मैं नोट किया। आई हैव नोटेड दिस वर्ड्स आल्सो बिकॉज़ इट इज गिवन द टेक्स्ट बुक। सो द फर्स्ट वर्ड इज यजरऊ, डेयर, वन हु डेयर्स, हिम्मत करना। तो अच्छा आता है यजरऊ, डेयर या ही डेयर्स। नेक्स्ट वर्ड तकफ़ला, तकफ़ला, ता का फा शद्दा के साथ ला, अल्ज़मा नफ्सहू, तकफ़ला अल्ज़मा नफ्सहू, टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर भी ही टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हिडन प्रोनाउन क्या है, ही टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तकफ़ला अल्ज़मा नफ्सहू, ही टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही हिडन है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इस्तग़रक़ा, इस्तग़रक़ा किसी काम में डूब जाना, एकदम बिजी हो जाना, मशगूल हो जाना, उसको बोलते हैं। और एक वर्ड किताब में जो अहाता, उसमें घेराव करना, मुनहमिक होना। तो इंग्लिश में ही ने तो इट कवर्ड या टुक, इट टुक, वहां सेंटेंस के लिहाज से इट टुक है। वो इस्तग़रक़ा नुज़ुल कुरान मुद्दता 23 आमन, इस तरह है। यानी कुरान शरीफ के नुज़ुल के बारे में, इट टुक a period of 23 years to reveal the holy Quran, ऐसा है। तो इस्तग़रक़ा एक मीनिंग दिया गया, अहाता घेराव किया। तो इट टुक या इट कवर्ड a period of 23 years, ऐसा है। तो इस्तग़रक़ा दिए तो कवर्ड भी लिखे, ओनली कवर्ड भी लिख सकते हैं आप, वो ब्रैकेट में ज्यादा समझना बोल के लिखा मैं, या ओनली इट कवर्ड या ओनली कवर्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, या टुक ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड यतग़य्यरु, और एक माने यतबद्दल, तग़य्युर आना, तब्दीली आना। तो वो ही और इट उसका प्रोनाउन का वो है, सेंटेंस में हो जाता है चेंजेस, चेंजेस होना, तग़य्युर ना। कुरान शरीफ क्या है, कभी तब्दीली कभी भी तब्दील नहीं होगा, बदलता नहीं, वैसा है वो। तो वर्ड का मीनिंग यतग़य्यरु या तबद्दल में चेंजेस, इट चेंजेस या ही चेंजेस, लेकिन यहाँ इट चेंजेस है सेंटेंस के लिहाज से। नाउ नेक्स्ट वर्ड नतमस्सकु, नतमस्सकु अरबी में मीनिंग नअख़ुदु बिशिद्दतिन, वी होल्ड फर्मली, वी होल्ड फर्मली, वी कैच फर्मली, हम मजबूती के साथ पकड़ते हैं, थाम लेते हैं, ये मायना है। न तमस्सकु हम, तो यहाँ पर न तमस्सकु उसके अंदर हिडन प्रोनाउन नहनु है, नहनु वी, इसलिए वी आया, वी होल्ड फर्मली। यहाँ पर वी हिडन ऐसा बोल नहीं सकेंगे, ना आ गया, ना इंडिकेट्स नहनु क्लियरली, न खुदू, ना यहाँ भी ना है, ना इंडिकेट्स नहनु। सो हर वर्ब के अंदर अरबी में एक प्रोनाउन अंडरस्टूड रहता है, एवरी वर्ब विल हैव ए प्रोनाउन इन इट। सो न तमस्सकु वी होल्ड फर्मली, न खुदू बिशिद्दतिन अरबी में ही अनदर मीनिंग है, हम मजबूती से थाम लेते हैं या पकड़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड, अब किताब में जो वर्ड्स एक्सरसाइज में दिए नहीं मैं नोट किया हूँ, क्योंकि वर्ड्स बहुत है, आप देखें 6 सेक्शन में हम खत्म करें उसको, तकरीबन हाफ एन आवर का वीडियो है या उससे बढ़कर है। युलाहिदु, युशाहिदु, यहाँ पर भी ही इट अंडरस्टूड ए प्रोनाउन, सीज ऑब्जर्व्स, तो ही सीज, he observes, ऐसा it sees, it observe। युलाहिदु युशाहिदु, देखना, ऑब्जर्व करना, सामने देखते रहना, उसको बोलते हैं, गौर से देखते रहना। युलाहिदु
युशाहिदु, मुलाहिजा करना, गौर करना, देखना. नेक्स्ट वर्ड अततव्वुर, डेवलपमेंट, ग्रोथ. और एक मीनिंग अरबी में अन्नम्बु. तो आपको अततव्वुर देंगे, विल बी गिवन अततव्वुर. कैन राइट डेवलपमेंट, ग्रोथ, अततव्वुर. वर्ड याद कर लेना. अन्नम्बु बड़ी मुश्किल से जेर जबर हरकत भी लगाया हूं आपकी सहूलत के लिए. और अरबिक और इंग्लिश एक साथ टाइप करना बहुत मुश्किल है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. बार बार कीपैड चेंज करना. और ये लेटर्स क्या है, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं अरबी, और इंग्लिश तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं. तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल से बनाया हूँ. आप लोग भी ज़रा अच्छी तरह तवज्जो देना, समझना, पढ़ना, याद करना. नेक्स्ट वर्ड है ततनावलु, तशमुलु. इट कंसिस्ट ऑफ. तो वहां पर कुछ ना कुछ रहता है सब्जेक्ट, वो इट है. यहाँ पर इसके अंदर भी प्रोनाउन हिया बोल सकते हैं. दोनों फेमिनिन वर्ड है इसलिए मैं हिया कह रहा हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ या शी, ऐसा हो सकता है. तो ये कुछ वर्ड्स किताब में दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर. वो मैं यहाँ पर नोट किया, पढ़ के सुनाया वीडियो में. आप भी बार बार देख सकते हैं, और किताब में भी है. कुछ वर्ड्स का ट्रांसलेशन किताब में मुझे उतना सही नहीं दिखा, तो मैं ज़रा बेटर तर्जुमा चेंज करके लिखा हूँ, आप देख सकते हैं. तो ये इतने वर्ड्स है इसके अंदर. अब हम एक्सरसाइज नंबर बी, मैंने बा लिखा अरबी में, तो मैं इसमें यहाँ पर एक्सरसाइज बी लिखा. अल मुफरद वल जम. आप समझ सकते हैं, हम इसमें पढ़ चुके हैं, फर्स्ट से में पढ़ चुके हैं. मुफरद जम, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल, अल मुफरद वल मुसन्ना वल जम, ये पढ़ चुके थे हम. सिंगुलर, ड्यूअल नंबर, प्लूरल नंबर. And if the word represents only one, then it is singular mufrad. The word that represents only two, then it is muthanna. And the word that represents more than two, then it is jam' plural. So Arabic has a particular number that is between singular and plural, that is muthanna, dual number. But it is not mentioned here. Al mufrad wal jam', singular and plural. And to make dual number muthanna, no problem, only you will have to add at the end of each word ani or aini, then it will become dual number. For example, waladun, a boy. If you add ani or aini, alif noon or ya noon with kasra to noon, waladun, a boy. Waladani, two boys. Waladaini, two boys. Kitabun, a book. Kitabani, two books. Kitabaini, two books. Qalamun, two pens. Qalamani, two pens. Qalamaini, two pens. Like this. Any word, you can choose any word. If you add ani or aini at the end of those words, it will become dual number. 2. You will get 2. Two things. So here, only thought mufrad and jam, singular and plural. Because plural words are changed from the singular words. Totally different sometimes. You have already studied in the first sem all these things, but for the beginners it is a little difficult to understand. So you'll have to study a few words of Arabic with its plural. Now we are starting. So I made a table. Al Mufrad, that is singular. Al Jam, plural. Al Ma'na, the meaning. The meaning of the singular word is given, because you can make the meaning, you can understand the meaning in plural. Only you will have to add s with this meaning. So I did not write
separate for meaning for singular and plural. So you can understand this. Only you will have to get only words meaning. That's all. So first word mufrad singular, al jam plural, al mana meaning. Nabiyun, nabi, prophet, plural, al anbiya. And another word is there, nabiyuna, nabiyina, but in the book it is given only al anbiya. So I selected only one word here. Nabiyun, prophet, al anbiya, obviously prophets. Al anbiya, prophets, prophets. Second word rasulun, plural form rasul, rusulun. Rasulun, singular word, plural form rusulun. Wow is deleted. This type of Alambiya, Rusulun, this type of plurals are known as Al-Jam'ul Mukassar, Al-Jam'ul Mukassar, plural, broken plural, Al-Jam'ul Mukassar, broken plural. A broken plural is that plural in which the singular word does not remain same. And you cannot see the complete form of singular word in the plural. For example, Ra, Seen, Waw, Lam. You can see Ra, Seen, Lam. Waw is missing. So this type of plural is known as broken plural al jamal mukassar. So Rasulun, Rusulun, messenger. Rasulun, messenger, Rusulun, messengers. In our Iman Mufassal, all of you know, Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi, this word. And then we have brought faith. Amantu billahi. And I believe, Amantu billahi, I believe, billahi, with Allah, in Allah, wa malaikatihi, and his angels, wa rusulihi, and in his messengers, wa kutubihi, and his books. So, Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, wa kutubihi and his books, wa rusulihi and his messengers. So, Rasulun, messenger, Rusulun, messengers, plural word. Then Malakun. Malakun, angel. Plural form Malaika. Malaikatu. Farishte. Rasulun, Rasul. Alambiya, पैगंबर. उर्दू में रसूलुन, रसूल भेजे गए हुए. Malakun, farishta. Malaikatu, angel. Malaikatu, angels. This is also broken plural. Malaikatu. Now, next word, Sahifatun. Sahifatun, a paper, a sheet, plural suhufun, papers, sheets, scriptures, we can say. Now, kitabun, this word also came. Kitabun, a book, all of you know, book. Kutubun, books, and in that, Iman Mufassal, just now I read, Amantu billahi wa malaikatihi, malaika here, wa kutubihi, kutub here, books, all books, wa rusulihi, rusul is also there, messengers, kutubi rusuli. So kitab singular, book, kutubun, books, plural. Now next word, ayatun. Ayatun, the original meaning is sign, sign of Allah. Ayat, plural word, signs. And regarding Quranic verses, ayatun, one ayah and one verse. Ayatun, verses. Ayat, verse. Ayatun, verses. And a verse of the Holy Quran. For example, Ayatu Surat al-Fatiha, seven. Ayat, ayah, ayat. So meaning ayat, verse, ayat, verses, or another meaning ayat, sign, ayah, signs. These words are used in both the meaning in the Holy Quran, ayat. Now, next word, mu'jiza. Mu'jizatun, miracle. You can see here miracle. Mu'jizatun, it's plural. Mu'jizatun, mu'jiza, miracle. Mu'jizatun, miracles.
Next word waqiyatun, incident. Waqiyatun, an incident. Waqa'i'u, incidents. Waqa'u, incidents. Now another word, next word rahimun, womb, womb of a mother. Arhamun is plural, plural wombs. Fi arhamil ummahat, the wombs of mothers. So rahimun, womb, arhamun, wombs. Next word, umman. All of you know the meaning of umman, mother. Ummi, my mother. I think there was a poem in the syllabus of Inder first year, I think. Ummi, my mother. Ummahatun, ummahatun, plural. Ummun, ummahatun, totally different word. Ummahatun, mothers. Mother, umman, mother. Ummahatun, mothers. And there is a famous, familiar hadith, all of you know, in Chehel Hadith, we say Chehel Hadith, Arba'in Hadith, uh, 40 hadiths in small that booklet. There is a hadith, Al Jannatu Tahta Aqdamil Ummahat. Jannat, paradise, lies under the feet of mothers. जन्नत माओं के कदमों के नीचे है. तो उम्महात, ummahat, this word, the plural word is used there in that hadith. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jannat tahta, under, aqdam, feet, qadam, plural of qadam, ummahat, mothers. So umman, mother, ummahat, mothers, mother, singular word. They give you the one here. So umman, ummahat. Next word, dalil, plural dalail. Dalils, evidence, proof, and there are so many meaning. A guide, that's also a meaning of this word. Anyway, dalil, evidence, proof, plural dalail, evidences, proofs. Okay. Now, next word sunnatun. Sunnatun, plural sunanun. Sunnat. All of us say this is for, this is wajib, this is sunnat. Tradition. In English, its meaning is tradition. But in our daily usage we say sunnat. This is sunnat, this is wajib, this is farz, this is halal, haram, mustahab. All of these words are, all of these terms are used in our daily lives. So sunnatun, tradition, sunanun, traditions. Sunanun, plural word is sunanun. Then tahiyyatun, 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 gift. Tahiyyatun means gift, and another meaning greeting. Tahiyyatun, plural, gifts or greetings. Tahiyyatun, tahiyyatun. We read at-tahiyyat, this word, in our namaz. At-tahiyyat, at-tahiyyat lillahi, as-salawatu tayyibatul mubarak. So at-tahiyyat, all gifts, all greetings to belong to Allah. So tahiyya, gift, tahiyyat, gifts, plural, and another meaning greeting. Next word, jadrun, plural word judur, root. So jadrun, roots, judurun, roots. So these are a few words which are given in your book. Study well. You can improve your Arabic knowledge. You can increase your vocabulary in Arabic, and you can benefit in your exams also with the help of all these words. They will ask you, sometimes there will be question, give the plural form of the following words. Then they will give you only these singular words. You can turn, you can change them into plural. So study all these words, and they will give you the words that are given in the book only. So better study well. Now, second exercise is also over. Now next one, al-adudad.
Jim. Exercise C. Opposite words. Opposite words. So they may give you some words, and they may ask you give the opposites of the following. Write the opposites of the following. Then you can. Then these will help you, and you can write perfectly after studying all these words. Not more words, only few words are given. First word, hidayatun. Hidayatun meaning guidance. Hidayat, hidayat है, रहनुमाई है, guidance. And walalatun, walalatun, misguidance, gumrahi. So hidayat opposite walalatun. No need to give meaning. If they are asking for opposite words, you will have to write only in Arabic, Arabic to Arabic. Hidayat opposite walalat. I gave you the meanings to make you perfect and you understand very well. So that I gave you all this meaning. So hidayat, opposite word walala. Guidance, misguidance. Rehnumai, gumrahi. Second word, rahma, rahmatun, mercy, blessing. You can say grace. Rahmatun, mercy, blessings or grace. Opposite word, adabun, punishment. Adabun, punishment. So, or you can say zulmun, torture, cruelty. Anyway, one word is given. The word is given here, adab in your book. Rahmatun, mercy, adabun, punishment. Now, next word, qasiratun. Qasirun or qasiratun. Qasiratun, feminine gender, qasirun, masculine gender. Meaning short. Tawilatun, tall or long. You can say long or tall. So, qasiratun, tawilatun. Tall, short. Or long, short. Next one, last word, sa'adatun. Sa'adatun, opposite word, shaqawatun. Meaning you can give good luck, virtue, bad, shaqawatun means bad luck, vice. बुराई, अच्छाई, नेकी, कामयाबी, शकावतुन माने नाकामी, बदनसीबी, कैसे बदनसीब, बैड लक, बदनसीबी, वाइस, बुराई, वाइस मीनिंग बुराई है, evil का माने में, सआदत, शकावत. So only a few words, I think only 5 words are there, 5 words. No, only 4 words are there. No? Hidayat, waladat, rahmat, adab, qasiratun, tawilatun, sa'adatun, shaqawat. Only 4 words are given. So learn by heart all these opposite words with meaning and the singular plural with its meaning and the words meaning also. So it would be better for you. So we'll stop here in this session. Now in the next session, we will study more exercises of first lesson Al-Quran Al-Kareem. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.